चलिए, अस्सलाम वालेकुम. My name is Dr. Baryal. Sorry for the delay. There's just some internet problem going on in our area. So I'm Dr. Baryal. My profession is general dentistry, and I will just share my journey with all of you, how I ended up with in the world of AI, and the message that we are bringing here today for all of you. So I started my practice as just like every other general dentist wants to start a clinic, and I came across all of these tools like scanners and OPGs, CBCTs, even the consultations that were going on, electronic health records, all of it. So I understood that this is, data that is being stored and not being utilized so intelligently. It's being, it's in every clinic, in every practice, it's there, it's present, but it's in a scattered state. And मतलब सोचें तो we can use it to our advantage in so many ways. That is how I, tapped into this world of artificial intelligence. And in order to understand it, to get into the depth of it, I had to, develop a foundation for it. Understand the basic terminologies, why artificial intelligence is so intelligent, how have people started to rely on it. For that purpose, I was fortunate enough to go to LUMS as a research associate of an MS program, Advanced Analytics and Healthcare. वहाँ पे I understood the fundamentals of data science, the data analytic part, the machine learning algorithms, all of these terminologies that I'm speaking right now as a dentist. That is where I basically understood the depth of it. Um, and with this, I was able to join AI Identify, which is now, mashallah, se making products which are AI integrated, and we are now market ready as well. This was a bit of my journey, how I've ended up here as a dentist. For all of those listening, all of the fresh graduates, even if we have any experienced practitioners here, uh, you guys will now understand why artificial intelligence is so important, and understanding it is now become a necessity. So, I'll talk about why data, digital dentistry, and AI is important, and how they are shaping our future, our profession, and more importantly, what skills you can learn to be a part of this transformation. Data literacy is the first step towards AI. Understanding how data can be used for how it can be cleaned, how it can be captured. All of this is the fundamental, the basic thing that all of us need to understand first, कि डेटा क्या है, डेटा कहाँ पे होता है, डेटा कैसे आप जमा कर सकते हो, डेटा को फिर कैसे यूज कर सकते हो. Even if it's a simple thing like, sorry, I just got a message के slides नहीं change हो रही. Can anybody confirm करें please? कोई जूम पे यहाँ पे एक्चुअली लोग डॉक्टर दयाल चेंज हो गई अभी। हो गई चेंज. थैंक यू। ठीक है, जी ठीक जी है, हो थैंक यू. गई थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू. So as I was saying, data literacy क्यों important है? Because एक simple thing, एक ले लो, as if आपने क्लिनिक में कोई फिलिंग की है, उस फिलिंग को, उसकी सक्सेस रेट सिर्फ जो है देखने के लिए यू गेट लाइक डेटा. एक एक डॉक्टर ने रबर डैम लगाया, एक डॉक्टर ने बॉन्डिंग टाइम इंक्रीज किया, एक डॉक्टर ने कैविटी प्रेप थोड़ी डिफरेंट की. ऑल ऑफ दिस डेटा, इफ डॉक्यूमेंटेड इन द राइट वे एंड प्रोवाइडेड टू अस, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड द सर्वाइवल ऑफ द फिलिंग, हाउ लॉन्ग दैट फिलिंग लास्टेड.
That was one of the research projects that I worked on. And you see how you can use data to actually uh, improve yourself, improve patient outcome. आपकी अपनी treatments इसमें जो है एक तरह से एनालाइज हो जाती हैं, और आप जो हो वो अपने आप को बेहतर कर सकते हो इस तरह इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। डिजिटल डेंटिस्ट्री की मार्केट का एक ग्राफ है। इट शोज दैट दिस इज नॉट द फ्यूचर, दिस इज द प्रेजेंट। It is a market of 4.6 billion, which is projected to go above over 9 billion USD. So this is just a stat that I would like to share with all of you. डिजिटल डेंटिस्ट्री क्या है? डिजिटल डेंटिस्ट्री में कुछ की टेक्नोलॉजीज हैं। उसके अंदर इंट्राओरल स्कैनर्स हैं, कैट कैम्स हैं, 3D प्रिंटिंग है, डिजिटल इमेजिंग, हमारा ओपीजी हो गया, सीबीसीटी हो गया। So I think all of the dentists practitioners are familiar with these. Now, if you combine practice management softwares, electronic health records, and AI-assisted diagnostic and treatment planning, and all of this together builds an ecosystem which AI will soon regulate and optimize automatically. This is something that goes in correlation. दोनों साथ साथ जो है ना काम करेंगे और सब ऑटोमेटेड होगा। AI की applications क्या हैं? As most of you might be aware, AI is now able to diagnose caries, periapical lesions, fractures. It is able to provide second opinions. It is able to design aligners for you. It is able to design crowns for you. AI is able to do all of this. Even it can, from small little things in your practice, like patient scheduling, billing, follow-ups, follow-up messages. AI can take care of most of these things for you. So this is, augmenting dentists instead of replacing them. These terminologies are so key right now कि AI जो है replace कर रहा है dentist को. It is not replacing us. It is augmenting us. It is helping us to become better and scale our practice. NHS, everybody's heard of it. NHS is one of the world leaders in AI adoption right now. And this stat shows that above 50% of the radiology departments have adopted AI in their radiology diagnosis technologies, जो भी इनकी imaging technologies हैं उसमें AI जो है इन्होंने integrate कर दिया above 50%। benefits बेनिफिट्स यही है कि जी एआई आपकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, आपकी जो पेशेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर कर रहा है, उसमें ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर so important as a clinician कि ultimately you end up just becoming a better dentist and a better medical practitioner because you have the aid of a tool that is so intelligent, helping you guys out in so many factors. um, this postgraduate diploma that we are starting now will basically build a foundation for all of you. जो चीजें हमने बिट्स एंड पीसेस में जमा की हैं, सीखी हैं, लेट्स से मशीन लर्निंग हो गई, उसके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, एज अ डेंटिस्ट, एज अ इवन मेडिसिन ग्रेजुएट, ये टर्मिनोलॉजीज हमें नहीं पता होती, हमें टेक साइड से बहुत दूर भेज दिया जाता है हमारी अपनी जो यूनिवर्सिटी की स्टडीज होती हैं। तो what we have done is we have हमारी टीम में जो सारे हैं they have industry level experiences and उस एक्सपीरियंस को हमने कंबाइन करके एक कोर्स बनाया है जिसमें सब चीजें आपको सिखा दी जाएंगी, all the basic terminologies, all of the things that you need to break into health tech and digital dentistry, and how you can eventually incorporate all of these things in your own practices. There are multiple job opportunities that will be open to you as well. Maz will be speaking about that later. So to end this, to end my part, we'll be preparing you for a future
where every clinic uses AI. Thank you. I would now one second. Where? इसी में ही है ना आपकी? Just take over. Just in case. बस. Assalamualaikum everyone. I am Dr. Danial Ahmed. Uh, as Baral mentioned about all of the things, tools that we are basically trying to incorporate in dentistry and digital dentistry, AI को सामने रखते हुए, I am also working with one of the projects of AI in dentistry. You must have heard of AI Identify. I am working with them as a machine learning annotator from the past 7 to 8 months. Uh, in AI, there are multiple steps before we actually train a model, and machine learning is basically the same concept. आप किसी भी चीज को जब ट्रेन कर रहे हो तो any model that you're about to train, you you label certain data for that. अब जो डाटा annotation है वो layman terms में is labeling that data. अब कोई भी आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना, आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यू लेबल दो स्पेसिफिक स्टफ. The models we are training for in dentistry, that requires labeling x-rays. अब जो image आप लोगों के सामने है, this is one of the periapical x-rays that we have labeled or annotated. You can see multiple things labeled here, जो भी हमें findings नजर आ रही हैं एक specific x-ray में, and then eventually based on these findings we are training a machine learning model ताकि in future जब हम कोई भी उसको डाटा फीड करें, जिस स्पेसिफिक डाटा के अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रेन किया होगा, इट विल बी गिविंग बैक अस द रिजल्ट्स, फैसिलिटेटिंग द डेंटिस्ट, सेविंग टाइम, उसी मैनर में जिस मैनर में हमने उसको ट्रेन किया है. अब डाटा एनोटेशन इज द फर्स्ट स्टेप जब भी आप एआई के थ्रू कोई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं. अब व्हाई इज इट नीडेड? बिकॉज इट टीचेस एआई व्हाट टू लुक फॉर. अगर हम देखें डेंटिस्ट्री की, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, कमिंग फ्रॉम द डेंटल बैकग्राउंड, मोस्ट ऑफ यू, it is a bit tricky when it comes to identifying the x-rays. अगर एक चीज एक्सरे में हमें सर्वाइकल की रीज नजर आ रही है, इट कुड बी आर्टिफैक्ट एज वेल जिसको हम सर्वाइकल बर्न आउट कहते हैं. तो बट एज एक्सपीरियंस डॉक्टर्स यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन एन एक्सरे, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लेबल करते हो. जब आप उसको करेक्टली लेबल करके दोगे, इन फ्यूचर आपको उतने ही एक्यूरेट आप एआई के थ्रू अपनी अपनी डायग्नोसिस को, अपने प्लानिंग को पेस अप कर सकते हैं. And for this, obviously, it needs a lot of examples. अभी examples सारी data से ही है, जो Dr. Beral mentioned earlier, that the data is the basics, basic step before starting to work on AI models. We need a lot of data to train, and then once that data is trained accordingly, then you can, actually figure it out कि आपने अब इसको क्या सिखाया और उससे क्या आप in return AI models को use कर सकते हो for what purpose. And the best thing about this is whenever you are teaching the AI models, it keeps the patient information safe. इसमें किसी भी किस्म के पेशेंट की नाम, एज, फेस कोई भी आप यूज नहीं करते हो while you training the AI models. So the patient confidentiality is maintained, and that is the biggest step. क्योंकि legal purpose से अगर हम देखें या जिस भी aspect से देखें, it is totally safe in that sense. नेक्स्ट, अब इसकी अगर हम देखते हैं कि क्या दिस पाइपलाइन, हाउ वी गो थ्रू डाटा